Welcome to all the viewers and members of WHRF who are here today for the session. I, Tejaswini Gitanjali Garg, coordinator of WHRF, feels glad to be a part of WHRF. I wholeheartedly thank Dr. Yoga Guru Neha ma'am, who is founder of WHRF, and Yoga Guru Dr. Mohan sir, who is founder patron of WHRF, for providing such a big platform. WHRF conducts research-based studies on every Sunday evening. Apart from conducting research-based studies, WHRF conducts other activities too, details of which can be obtained from Facebook. Today is 83rd episode of Talk Series with Nita Bhasinji. On behalf of Women Health Research Foundation, I wholeheartedly welcome our today's guest, Nita Bhasinji, who is here amongst us to throw light on the topic, rise in infertility and role of lifestyle modification. She is a certified nutritionist and a wellness coach from California. She is a certified Reiki Grand Master and nutritional advisor on integrative dietetics, accredited by ISMN. She is also a motivational speaker and author of book on holistic wellness and Reiki. A very warm welcome to you, ma'am. Thank you, Gitanjali. Thank you so much. So very grateful. And दिल से मैं आभार प्रोडक्ट करना चाहूंगी WHRF प्लेटफॉर्म का for inviting me once again to talk on rise in infertility versus role of lifestyle modification. And a very big thank you to none other than Guru Neha ji, President of WHRF, and also my thanks to Mohan sir, founder of TYG, the Yoga Guru Institute. And now, friends, I would like to share the screen with all of you. Yeah, so as the screen says here, that the infertility clinics are mushrooming. और ये तो हम सब और आप सब भी देख ही रहे हैं कि कितनी तेजी से ये जो न्यूज़पेपर खोलो तो हर पेज के ऊपर शायद एक या दो एडवर्टाइजमेंट जरूर होंगी कि आप यहाँ से IVF करा सकते हैं, आप हमारे पास आइए, आपको हम खुशी दिला सकते हैं बच्चे की। यहाँ पे जो पहली स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ वो इस चीज से आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि अगर एक स्पर्म और एक एग अंदर बात करते होंगे तो क्या करते होंगे। वो कहते हैं एक दूसरे से आई हैव न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड आई एम टायर्ड। जब किसी को आहार ठीक से नहीं मिलता तो हमेशा थका थका ही रहता है और यही हाल होता है। इनफर्टिलिटी का मेन कारण होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पौष्टिक आहार की कमी। अब बेसिक जो न्यूट्रिशनल नीड्स होती हैं, दैट इज वन इज ओमेगा 3, अदर इज प्रोटीन, and then it is multivitamin, multi-minerals, which are 13 vitamins and 11 minerals that everybody needs on a daily basis. पर प्रश्न ये आता है अगर किसी से बात करें कि कारण तो सबको पता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, लेकिन इसको इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है हम तो अच्छा खाना खाते हैं, हम तो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, दही भी लेते हैं, दूध भी लेते हैं, हम अंडा भी खा रहे हैं और हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं जो होना चाहिए, फिर ऐसा क्यों होता है। तो न्यूट्रिशन गैप कैसे हो सकता है। एंड कई बार तो ये भी सुनने में आता है कि हमने सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ ठीक है, कोई हमारे में कमी नहीं है। फ्रेंड्स, कमी नहीं है, लेकिन फिर क्यों ऐसा हो रहा है। मिस पलका, who is a senior clinical psychologist and founder of DUMPITO, a mental health and holistic well-being platform, says that बहुत सारी स्टडीज बताती हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन and grief may contribute to infertility. Almost 40% women and men experiencing infertility have some kind of stress and some kind of nutritional deficiency.
So important thing for everyone to remember is that all food is not nutrition, but all nutrition is food. Have you ever wondered, कभी आपने सोचा है कि इनफर्टिलिटी जो है वो राइज पे क्यों है? हाँ, सॉल्यूशंस तो बहुत निकल आए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं इसके, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आजकल. बट इम्पोर्टेंट इज टू थिंक व्हाई इट इज राइजिंग, व्हाई इज इट राइजिंग. एक्चुअली अगर देखा जाए तो अब ये किसी एक लाइफस्टाइल डिजीज का रूप ले लिया है. जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है एपिडेमिक बन गई हैं, वैसे ही इनफर्टिलिटी भी एपिडेमिक का रूप ले चुका है. सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं? आप अपने एग्स को फ्रीज करा सकते हैं, आप स्पर्म्स को फ्रीज करा सकते हैं व्हेन दे आर हेल्दी, आप सरोगेसी के लिए जा सकते हैं, आप आईवीएफ के लिए जा सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शंस हैं. बट important is to take ownership and focus on the nutrients, and holistic well-being and lifestyle modification is the key, because it has been observed that despite 2-3 attempts at IVF also, people yet don't conceive and they are still clueless, and then they sometimes give up and उनका stress level भी और बढ़ जाता है. Let's talk about what are the biggest and the most common reasons. करियर गोल जो आजकल जेन वाई ने अपने लिए रखे हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का. एंड परहैप्स दैट इज द रीजन, क्योंकि उनके इतने बड़े गोल्स होते हैं, इतनी बड़ी ड्रीम्स होती है, इतने बड़े उनके सपने होते हैं, that they marry also very late. Night shift duties give no time to the couples to spend time together. कपल्स के पास टाइम ही नहीं है कि वो अपना टाइम, क्वालिटी टाइम जो एक मैरिड लाइफ का है, वो स्पेंड कर पाए एक दूसरे के साथ. कई बार तो ऐसे होता है कि हस्बैंड कहीं काम कर रहा है, वाइफ कहीं काम कर रही है, डिफरेंट टाइम जोन के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको मिलने का भी समय नहीं मिलता. नाइट शिफ्ट ड्यूटीज उनकी जो बॉडी क्लॉक है उसको ही बदल देती है. लॉन्ग सिटिंग आवर्स इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर्स इज अनदर रीजन, बिकॉज इससे क्या होता है कि जो उसमें से रेडिएशंस आती हैं वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को कई बारी बहुत तेजी से इफेक्ट करती हैं. सेडेंटरी लाइफस्टाइल also affects fertility immensely. Sleeping late at night or watching movies and doing WhatsApp. Physical inactivity के ऊपर ये बताया जाता है कि किस तरह से वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है आपके हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक एनवायरनमेंट को इन द मेल एंड फीमेल. ये बहुत स्टडीज की गई हैं. इन फैक्ट इफ द मेल और फीमेल इज ओवरवेट, दे स्मोक एंड दे ड्रिंक, then there is higher risk of abnormal cells and eggs, which leads to infertility. Do you know? आइए जानते हैं, जानते भी होंगे पर कई बार ये ध्यान नहीं देते, that almost 20% of married couples are struggling with lifestyle problems of low fertility rates. आप किसी से भी बात कर लीजिए, जिस तरह होता है ना, आप अगर 3 लोगों से बात करते हो उनमें से एक जरूर होता है जिसको प्रॉब्लम होती है डायबिटीज की, थायराइड की या किसी लाइफस्टाइल डिजीज की. ऐसे ही अब होने लगा है कि अगर आप मैरिड कपल्स के बारे में बात करेंगे तो हर फैमिली में एक जना जरूर है who is suffering from this problem. Many times couples are happily married and they have no issues also about having a child. There is no problem with them. But they deliberately decide to enjoy for a couple of more years before they're ready to take the responsibility of a child. They don't realize that age catches up very fast these days. उनका तो मोटो है that they want to have this status as dinks, which is double income, no kids. कई बार इसलिए भी नहीं करते कि there is a stress of money. Income is a problem. आइए और कुछ कारण की बात करते हैं.
वर्क फ्रॉम होम या आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अक्सर ये देखा गया है थोड़ी देर के बाद चाय और कॉफी चल रही है, फिर चाय और कॉफी चल रही है, या काम का इतना स्ट्रेस होता है या किसी और चीज का कि एक ये विशियस साइकिल बन जाता है। आप चाय कॉफी पीते हैं और चाय और कॉफी जो है वो जब आपकी बॉडी में जाती है तो वो एक दोस्त की तरह अंदर जाती है। किसकी दोस्त बनती है? वो कैल्शियम और आयरन की, इनकी सबसे ज्यादा दोस्त बनती है, और तीनों हाथ मिलाते हैं और आराम से आपके शरीर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं थ्रू द यूरिन। What I'm trying to say is the more coffee and tea you have, the more you will deplete yourself of iron and calcium from your body. और जब ये होने लगता है, it results in hormonal imbalance and that leads to nutritional gap. So cycle जो है बड़ा vicious है। आप sedentary lifestyle रखते हैं, आप चाय कॉफी पीते हैं, आप कैल्शियम आपका खत्म होने लगता है, आपका आयरन डिप्लीट होने लगता है, धीरे धीरे आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। एंड सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस जो आप नोट करेंगे वो होते हैं डिप्रेशन, एक्सेस फेशियल हेयर, क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, डिस्टर्ब स्लीप, एक्ने, वेट गेन, लोअर बेली फैट। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लोग बोलते हैं मेरा लोअर बेली फैट बहुत ज्यादा है, ये बताइए कैसे कम होगा। देन हेयर फॉल, डैंड्रफ एंड वीक बोन्स। हेयर फॉल होता है या हमारा डैंड्रफ होता है, हम क्या सोचते हैं शैम्पू बदल लें, हम क्या चीज खा लें, यू डोंट रियलाइज दिस इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। फ्रेंड्स, अनदर थिंग इज ओबेसिटी। मोटापा जो है वो भी लीड करता है इनफर्टिलिटी के लिए। Insulin resistance and thyroid disorders also cause infertility. A low anti-Mullerian hormone is another reason for infertility, caused again वही बात आई है, by nutritional deficiency. बार बार बात एक ही आती है, nutritional deficiency. And there are many testimonials about this. So if you continue with the same habits, same eating patterns, same work style, and you don't want to change your lifestyle or bring any modification in your lifestyle, फिर तो कभी कोई सुधार आ ही नहीं सकता। आप कितना भी उसके ऊपर काम कर लीजिए, कितनी दवाइयां खा लीजिए, जितना मर्जी आप IVF करा लीजिए, because you are not creating a very harmonious environment inside your body for the egg and sperm to कि वो वहां पे पनपे। आइए आगे बात करते हैं कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टिमुलेटिंग ओव्यूलेशन एवरी मंथ, ठीक है। तो और पिट्यूटरी ग्लैंड की अच्छी सेहत के लिए क्या चाहिए होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड से अगर कोई सोचे कि मैं अपने खाने से पूर्ति कर लूं, कर सकता है, पर बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है these days to get onto the supplements as soon as you know. In fact, even if you don't know, it is important to be on supplements these days. Vitamin C is very important. Thiamine is important. Folic acid is important. Also, बहुत लड़कियों को बहुत कम उम्र से ही, बहुत ही कम उम्र से PCOD और PCOS हो जाता है, and then the eggs that are supposed to be released every month from the ovaries do not happen. पर बेस्ट पार्ट इज आप अपना न्यूट्रिशन को करेक्ट कर लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं, एवरीथिंग कैन बी करेक्टेड। So that's the best part and the happy news. Everything can be corrected. आगे हम बात करते हैं कि जैसे अभी हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि जवानी में ही बुढ़ापे की बीमारियां बहुत जल्दी शुरू हो गई हैं, और इसीलिए ovaries are aging faster these days than the chronological age of the person. The main reason इसका क्या है? बहुत पहले भी हम बात कर चुके हैं और कई बार आप सुन चुकेंगे, that is because of oxidative stress and pollution. And this happens, again we'll come back to the same thing, this happens because of unhealthy eating habits, lack of nutrients in your meals on a daily basis. And these habits create an excess of free radicals, and this affects the estrogen production.
Many young women now experience irregular periods or no periods, or they suffer from hot flushes and vaginal dryness, which also leads to infertility. Yes, there are other genetic causes, and chemotherapy treatment is another factor that leads to infertility, which is not in your control. So there are certain things which are in your control, but there are certain things which are not in your control. But we can focus on what is in your control. Blocked fallopian tubes. अगर किसी की blocked fallopian tubes हैं, तो फिर obviously the egg cannot reach the uterus. The tubes can be blocked because of, again, inflammation or infection or due to pelvic tuberculosis. Any previous history of surgeries in the abdomen or pelvic area could also become the cause for infertility. Polyps, which is actually a small mass of cells that grow in the body, or cyst or fibroids. बहुत common है आजकल कि मुझे fibroids हो गया, मुझे cyst हो गया, डॉक्टर ने बताया है. अब वो uterus में हो जाता है, तो that can also cause infertility. But what is the good news? You can change, you can reverse all these things. ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बहुत आसान है, simple है. You just have to focus on changing your lifestyle. Focus on modification, transformation of lifestyle. Take help. And remember the principle of EARN, E-A-R-N. E stands for exercise every day. Do not be sedentary. A stands for always stay happy, have a good attitude. R stands for take adequate rest. रात भर जाके आप मोबाइल को मत देखिए, आप बुक रीडिंग करके सो जाइए. And N, which is the base, basic foundation, वो strong होनी चाहिए. That means what you eat should have भरपूर nutrition, भरपूर आपकी जितनी requirement है, प्रोटीन की वो पूरी होनी चाहिए, macronutrients की पूरी होनी चाहिए. Stay hydrated. Then the next reason is cervical stenosis. यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा cervix होता है वो narrow हो जाता है, and that obstructs when the sperm wants to enter the uterus. अब ये narrow की अगर बचपन से narrow है, that's a different story altogether. वो आप exercises से, yoga से भी उसको आप बड़ा कर सकते हैं, unless there is some medical issue. Otherwise, inflammation is again the reason क्यों ऐसे shrink कर जाता है, क्यों narrow हो जाता है. Inflammation से होता है, सूजन से होता है, और सूजन की होती है free radicals से होती है. Free radicals क्यों होते हैं, जब nutrients की कमी होती है. Sometimes the mucus of the uterus lining is defected and won't allow the sperm to travel to the uterus. जब हम बात करते हैं it is defected, defected कैसे होती है, जैसे एक smooth road है, अब उसमें बड़े सारे खड्डे हो गए तो defected होगी. तो ये defected हो क्यों रही है, again because of free radicals, inflammation, lack of nutrition. Smoking and drinking alcohol at any age is very harmful and can affect your fertility rate. Friends, जो भी reason हो, ultimately it boils down to inflammation, lack of nutrition, lack of exercise, and there is help available. You can always get back to a holistic coach who can help and give you knowledge about it. Now let's see how smoking affects your DNA. Smoking जो है आपके DNA को भी अटैच करता है in a very big way. It's a big enemy of fertility. जो आपका genetic material होता है eggs का, as well as the lining of the uterus जो हमने इससे पहले देखा, वो दोनों जो है they react both to active and passive smoking. That is the reason you should take more than what you require of folic acid and vitamin C. अब कैसे पता चलेगा कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, उसके लिए it is important that you have to get back to somebody who knows about these things, who's a consultant on nutrition. Excess radiation from computers or spending too much time on your mobile adds to your stress levels and affect fertility both by reducing the quality and the quantity of the eggs and sperms. Stress is also a very, very big factor, and it increases the chances of miscarriages also.
And reducing stress by taking help from a qualified clinical psychologist may be a very good idea to increase the blood flow to the reproductive organs. क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो जहाँ जाना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाता. तो यू हैव टू लर्न द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस, ताकि जब आपका ब्लड का फ्लो होगा तो उसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस रीजन तक पहुंच पाएंगे जहां उनको जाना चाहिए. Next is invest in a personal psychologist. Meeting a psychologist and therapist will help you to identify your thought process, because हमारी thought process क्या है when we are planning a child or when we are going for fertility, and give rational thinking clarity. Areas where a psychologist can help, because जब आप का normal baby नहीं हो रहा and you are trying for a baby, तो एक बहुत बड़ा trauma होता है. It's an event which you experience and you're unable to conceive naturally. कई बारी repetitive abortions, miscarriages, medical conditions होती हैं, IV, surrogacy, adoption, abnormality in the fetus leading to abortion, fragile X syndrome, Down syndrome, other cognitive abnormalities, sudden loss of heartbeat. So you go through stress. This is where the psychologist really can help you and get you out of it as soon as possible. Therapy can help the new mother, the couple, and in the importance of family counseling is very important. Preparing for motherhood is not easy these days, because पहले जमाने की तरह नहीं है. अब mothers working भी हैं, multitasking हैं, तो stress तो बढ़ता है. Body changes होते हैं, hormonal changes होते हैं, erratic sleep cycles हो जाता है, pregnancy related thyroid होता है, blood pressure होता है. Issues of stress definitely increase, friends. Stress related issues may be stress at work, behavior management, things you can control versus things you cannot control. So always seek help and do not delay taking help from people. कई बार हमारे को होता है, मुझे सब पता है, my doctor will tell me, but trust me friends, besides the doctor, you definitely need to have your personal therapist. You also need to have your personal, diet coach as well on the nutrition. The simple जो basic things हैं जो सबको पता है, लेकिन once again in black and white, fresh nutritional food is the key. पर आजकल fresh मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें वो पौष्टिक आहार है कि नहीं है is a big key. But there are a lot of people who are giving fresh fruits and vegetables. They are giving organic fruits and vegetables. Go for them. Lifestyle modification is very important. Staying happy and stress-free is important. Both partners should exercise every day. It's not कि तुमको माँ बनना है तो तुम exercise करो, तुम ठीक से सो, तुम ठीक से खाना. No, it's the responsibility of the father as well. Always, because the sperms are coming from there. He also needs to be equally healthy. Always have an attitude of gratitude towards yourself and each other. Have adequate peaceful rest when you sleep. Focus on high nutritional diet every single day. कई चीजें रिपीट होंगी, पर रेपिटेशन के बाद भी आपको नहीं कर पाओगे, पर जरूरी है उनको करना. Now let me talk about some certain supplementations which are very important if you are going for fertility. One is CoQ10. CoQ10 जो है आपकी बॉडी में डिक्रीज करता है with age. So it's important to take it from outside as a supplementation. How much to take? Well, that depends on each individual. Age-related OCT. OCT क्या होता है? It's a female germ cell which is involved in reproduction. And it has been seen that people who, when you start having a CoQ10 ka proper dose, then the quality and quantity of the sperm and egg is reversed. When you don't take it, then it is reversed. That is the reason fertility नहीं होती. But ये लेने से आपके results बदलने शुरू हो जाते हैं. CoQ10 gives energy to the sperm and eggs as they are prone to destructive oxidation. CoQ10 increases both quality and quantity. It has been seen, studies have shown that both quality and quantity increases by 53% of the sperm, and by the mortality rate by 26%. Egg quality and an increase in pregnancy rate has been seen to 90 days minimum.
So you can try these things. You can get back to us to know more. Then vitamin C. Vitamin C का बहुत बड़ा role है in fertility, to avoid infertility. It regulates the menstrual cycle. It improves your progesterone levels. It increases the sperm count, reduces stress and mood disorders. And vitamin C has antioxidant properties that can suppress chronic inflammation in PCOS and PCOD. Next, we come to, which is a very important nutrient, that is omega-3 fatty acids. Omega-3 क्या करता है? It improves ovulation and cellular differentiation. It decreases insulin sensitivity, excessive oxidation, and folliculogenesis. Folliculogenesis क्या होता है? It is a process by which a follicle forms, proceeds through several growing stages, develops, जो एक eventually जो आपका एक egg है, eventually जाके जो बड़ा egg बनता है, जिससे एक maturity आती है और फिर आप बच्चे को पैदा कर पाते हैं, उन सब प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है. Also, salmon omega-3 की डोज लेने से you decreases the chance of cardiometabolic risk factors. Vitamin D is very, very important again in case of infertility and you are planning. Studies have shown that vitamin D improves the success rates in both in IVF as well as transfer of frozen donor eggs into the embryo. Increase in fertility rate. PCOD की मैनेजमेंट में भी विटामिन डी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें और करता है. I'm just talking in terms of infertility. Now there are a lot of myths about going to a wellness consultant or to a psychologist. लोगों के जो myths होते हैं वो है it's an expense. It is only for rich people who can afford it. Will it work? हाँ, जाके उनसे कुछ supplementation लेके कुछ करके कुछ होगा क्या? इतनी बारी तो मैं डॉक्टर के होके आ गई हूँ, कुछ नहीं हुआ. But friends, investment in your health will always give long-term benefits and reboot your thought process and rational thoughts. Real-time technical food counseling and therapy works. ये one day में नहीं मिलती है. When you are working with a wellness consultant, you have to work for at least 6 months together because it takes time. It takes a lot of time for you to understand and your consultant to understand. Meeting or investing in a holistic wellness consultant will help you to customize your needs as an individual and as couple. आइए बात करते हैं कि आजकल ऐसे ट्रेंड्स चल क्या रहे हैं. ट्रेंड्स पता है क्या चल रहे हैं? That most young people actually do not want to have children. Their thought pattern is not wanting to take responsibility, but वो कहते हैं कि not taking responsibility is like going against nature, and this eventually manifests itself in infertility. आपका attitude क्या है towards having a child really matters. And why newly married couples think like that? Because उनको लगता है यार एक ही तो जिंदगी मिली है, बच्चे के साथ तो बंध जाएंगे, पहले ना थोड़ा घूम फिर लें, पहले कुछ ट्रिप्स करके आ जाएं, पहले कुछ फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर लें, कुछ पार्टी कर लें, कुछ बूज कर लें, कुछ स्मोकिंग कर लें, एक बारी बच्चा आ जाएगा तो सब बंद हो जाएगा. सो उनका ये जो थॉट प्रोसेस होता है ना, आप मानो या नहीं मानो, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के हर सेल को जा रहा है. तो whenever later you think to have a child, the cell is already tuned कि इनको बच्चा तो चाहिए नहीं, तो वो भी अपने आराम से बैठा है, उसको कोई मतलब नहीं. आप करते रहो ट्राई, वो नहीं करेगा. तो you have to change your thinking pattern. आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, हर सेल की सोच को भी बदलना पड़ेगा. That is where the role of a therapist comes. And कई बार ऐसे भी होता है, you don't want to have children, so you don't want, you start having some pills so that you don't become pregnant. But these are not the right ways because they destroy your body from inside and give you a lot of side problems. But making lifestyle and behavioral changes is the most important thing. And this is what, infertility actually means. I stands for inadequate nutrition.
And N for negative attitude. When you have negative attitude towards anything, it will give you negative results. You will only attract what you are saying. And वो जो शुरू में मैंने पहले से बात करी थी about your सोच, उस वहाँ पे affirmation बहुत help करती है. Then F is lack of fun time. You're under so much stress कि fun ही नहीं है आपकी life से, fun कहीं उड़ गया है. So it is like, when the couples, they want to have a baby now and they have the sex only to have a baby, then the fun is lacking. Then it's not, you're not really going to conceive because you're stressed. पता नहीं इस बारी होगा कि नहीं होगा, पता नहीं इस बारी होगा कि नहीं होगा. So you have to have fun in your life. Inadequate rest. Thyroid could be a problem. Obsession with income leads to stress. Lack of green leafy vegetables. हफ्ते में एक बार ही खाने से नहीं होता, आपको देखना है एक होलसम मील, बैलेंस मील रोज खाया जाए. Too much focus on I, me, mine. Untrained thoughts. Thoughts को train करना जरूरी है. Lost youthfulness. कि आप अब जब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो you think चलो कोई बात नहीं, there are a lot of ways I can still have a baby. But जो चीज आसानी से हो सकती है उसी टाइम कर ली जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है. So the next slide says change in our thinking pattern is very important. It's up to us to bring about a change in our thinking with regards to supplementation and lifestyle modification. इसको आप by the way मत लीजिए, इसको ये तो life है. अगर आप change नहीं होंगे, then you will head where you are heading. You have to make changes. And change is not very difficult. It's a choice one has to make. So why not make healthy choices? And, before I finish, I would just like to share a very nice small story with you. That is, कि एक बारी ना एक पेड़ होता है और वो धीरे धीरे ना मर रहा होता है. उसको तो कितनी मेहनत करते हैं लेकिन वो पेड़ जो है पनपता ही नहीं. अब बहुत महंगा पेड़ किसी ने अपने घर में लगाया होता है कि जहाँ पे अपने आप ही पानी आता था और सब कुछ होता था. तो द मैन वाज वेरी सैड. उसने पता नहीं कहाँ से मोस्ट एक्सपेंसिव साइंटिस्ट को बुलाया और सबको इकट्ठा किया कि देखो इस पेड़ को रिवाइव करो, मुझे बताओ जो इसमें डालना है डालो, पर इस पेड़ को खड़ा कर दो. सबने किसी ने कोई खाद डाली, किसी ने कुछ डाला, किसी ने कुछ बताया, पर कुछ नहीं हो रहा था. दैट मैन वाज वेरी सैड. तो एक छोटा सा बच्चा था, बोला अंकल क्या हुआ आपके पेड़ को? उसने कहा बेटा ये पेड़ ना मर रहा है एंड आई एम वेरी सैड अबाउट इट. इसे तो इसको आप पानी क्यों नहीं देते? ये तो पानी तो दे रही है, देखो नलका चल रहा है उसमें से पानी आ रहा है. उन्होंने देखा हाँ नलका खुल के पानी आ रहा था, पाइप में से भी निकल रहा था. तो सर अंकल आओ चलो मैं देखता हूँ पानी पेड़ में जा रहा है कि नहीं जा रहा. और वो पेड़ के पास गया, उसने पेड़ को हग किया, पेड़ से बात करी. तो उसने पेड़ के नीचे ना ऐसे ऐसे करके खोदना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया जैसे पाइप अंदर से जाती थी. वहां पे देखा जहाँ पाइप पेड़ तक पहुंचती थी वहां पर एक कट था, तो पाइप से पानी ही नहीं आ रहा था वहां तक. सो द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कई बार आप सब कुछ कर लोगे, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, पर जो मेन थिंग है वो हम भूल जाते हैं कि वो जो हमारे ये थिंकिंग पैटर्न है उसको चेंज करना है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, खाने को हमको सप्लीमेंटेशन लेनी है, हमको रेस्ट करना है. स्मॉल थिंग्स को भूल जाते हैं. वहां पे क्या था? पानी की पाइप. सो with this I come to an end of my presentation. I hope I have been able to give you a lot of reasons why mushrooming of infertility clinics is happening. पर friends उधर आप लोग ना जाएं वो बेहतर होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना बी योर ओन डॉक्टर, यू कैन हेल्प योर सेल्फ. ऑफ कोर्स अगर कोई इशू होता है देन ऑफ कोर्स डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर फॉर अस. एंड थैंक यू सो मच गीतांजलि फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टुडे. Thank you, Nita ji. It was a wonderful session. I have some questions. If there is unexplained pregnancy, it means that if every test is all right in female body, nothing sort of problem is there in male and female, then how can nutrition help? सब कुछ ठीक है, हस्बैंड वाइफ में सारे टेस्ट हो गए हैं लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, यही आपका प्रश्न है ना? और यस और न्यूट्रिशन उसमें कैसे काम करेगा? हाउ कैन न्यूट्रिशन हेल्प? डेफिनेटली
जैसे मैंने बताया कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है. If you will come, like somebody comes to me with this kind of a issue, सब कुछ ठीक है लेकिन हम pregnant नहीं हो पा रहे. So then we have a questionnaire where we ask आप खाते क्या हैं and all, and then finding out, once they start sharing the plate and everything with us, we realize what are the nutrients missing in their plate, and then we help them कि कौन सा आपको खाना लेना चाहिए ज्यादा और किस टाइम पे खाना चाहिए. Then the other thing is कि ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन खाते ही आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, नहीं. It is a cycle. You will have to give yourself at least 1 year in advance. आप 1 साल पहले से प्रिपरेशन करेंगे. Planning and preparation has to be done 1 year in advance if you are going to have your supplementation, because body का एक पूरा cycle जो होता है वो 3 months का होता है. So you have to give yourself at least 3 cycles दोगे आप 3 महीने के, तो 9 महीने और 1 cycle और दे दो. Then 100% you will be equipped with the right nutrition in your body, but both husband and wife must become a part of it. And we have seen very good results after people have improved their nutritional content in their food. And my second question is, if someone is taking therapy from clinical psychologist, as you just now said, to reduce stress level, does this increases chance of getting pregnant? Can you give an example? Yes, I can recollect an example for this. At our DUMPITO mental health and holistic well-being platform, we did have a case where everything else was fine, except, their stress levels were very, very high. So the therapist, when she works with them, she has her own techniques. And by using the CBT techniques, she helps them to reframe the thoughts, where जहाँ से उनकी जो stress level है वो कम होने लगती है. And within a couple of sessions, when the stress level is absolutely low, then the body starts to function properly. जैसे मैंने एक slide में भी बताया था कि आपका blood flow भी कई बार restrict हो जाता है when you are stressed. तो जब वो restrict हो जाता है तो वो it is not reaching the organs it is supposed to reach. तो organ जो है धीरे धीरे unhealthy होता है. तो जैसे जैसे आपका stress कम होने लगता है, आपकी ब्लड का फ्लो और आपकी न्यूट्रिएंट्स का फ्लो जो है वो प्रॉपर होने लगता है, एंड देन यू आर एबल टू कंसीव वेरी वेल. एंड द थेरेपी आल्सो हेल्प्स टू गेट देम आउट ऑफ द fear साइकोलॉजी, बिकॉज अब वो इतने फेयर में चले जाते हैं. जब स्ट्रेस हो जाता है तो फेयर हो जाता है, जब फेयर हो जाता है तो स्ट्रेस हो जाता है, तो उनको उस फेयर मेंटालिटी से बाहर निकालना. सो दैट इज द रोल ऑफ द थेरेपिस्ट. And yes, this couple who had come, they took therapy for about 6 months, and then they gave a very good news. They had a baby boy. So it does help. This is just one of the cases I talked to you about. Okay. Thank you, Nita ma'am. It was a very wonderful and informative session. Thank you.